I mean, there was no question about that, how the film will do. The numbers are a different issue altogether. Yeah. The big film is there, so numbers will be very big. But for this kind of film, for this stature of the film, the numbers are doing very well. Yeah. I know one thing that कोई भी theater में अगर जाएगा, if anyone goes to the theater and watches the film, no one will come out of this film saying that, 90, 95, 97% people will come out saying, wow, I enjoyed that. So similarly it happened even in Article 370. हम जब फिल्म देख रहे हैं, लोग इतने मतलब खड़े होके और चौड़े हो रहे हैं और तालियां बज रही हैं, एंड वी रियलाइज दैट नॉट ओनली हम लोग मुतासिर हो रहे हैं इस फिल्म से, लेकिन देखने वाला हर शख्स, हर इंसान जो है उसको उतना ही मज़ा आ रहा है और वो दिल से देख रहा है. There are certain movies that teach us a lot. Some movie teaches some moral science stories. Some teach us history and the importance of history of India and how things are worked around to make sure that India as a country is in a good place and it's for the betterment, right? So this is one movie that we are going to talk about today with the cast of the movie Article 370, which has been out. It's doing amazingly well, and as a viewer, let me tell you, few things that I just couldn't forget about the movie was the acting, the story for sure, the direction, the background music, the dialogues. Everything was on point. Thank you for joining us today at midday. I had to start it with seeing the things that I actually thought of when I watched the movie and I came out of the theatre with the last song, which was amazing as well. Yeah. So the movie is out. Congratulations to all of you. It's been 2 weeks, but it's going really well for the movie. What was that Friday like, when the movie was released? I'm sure the conversation must have been around, when you guys were shooting for the movie, कि, ये हो सकता है, ये हो सकता है. But the fact is, rather than, if I say the fact कि how well will it do in terms of numbers, but the story that it brings, the importance of the story of the movie, will people be able to figure that out well? What was that like for you guys? When I heard the subject, when the director narrated me the story in detail, I told him, the way you have narrated it, if you are able to make this film like this only, with the same details, then the film is a hit film. It will be a very good film. The same thing happened when we saw the special screening before the Friday. Mm-hmm. I mean, I had no doubt that about the film at all. It's come out a very, very honest film, very honest effort. All the actors were good. Director, of course, is very good. So, I mean, there was no question about that, how the film will do. The numbers are a different issue altogether. The big film is there, so numbers will be very big. But for this kind of film, for this stature of the film, the numbers are doing very well. Yeah. I mean, I was reading about that, about Yami Gautam, that they had given some data that the woman-oriented film, this number is very good, and this is the 5th or 6th highest grosser as far as the woman-oriented film is concerned. So the numbers are doing very well. Numbers are well. The film is doing very well, and it's on mouth publicity basically. And today, the 3rd week has started for the film, and the film is doing very well. So we had no doubt at all. Obviously, when I spoke with Aditya, our director, and he explained what the film and the part and everything was about, and my first impression was that very similar, that here's a man who's very, very passionate about what he wants to make and is very, very clear in terms of how he's going to present it, how he's going to express what he's thinking in a way that he's able to take the audience along. So it was that meeting was a very impressive meeting, and yet you've been around and you've met a lot of people and you've been disappointed by some. So you're like, यार ये दूर के ढोल सुहाने वाला मामला तो नहीं है कि मतलब हाँ दिख रहा है अच्छा लेकिन होगा नहीं होगा. Next experience was on the set when we started working, and I realized that the energy was very different from any other place that I've worked, because it was
it was almost like friends coming together and saying, यार सुरभि यार तुम ये कर सकती हो क्या, या ये, और तुम कह रही हो कि आप, you say that नहीं, I think this is something that I feel, oh wonderful, let's try that, and I'm like, what do you mean? Well, you just agreed to what I was bringing to the table, and so it as an actor it felt like a very, very collaborative process. Finally, when we ended up going for the screening just before the Friday that you're talking about, I was, as an actor, you're very generally slightly narcissistic. You want to watch yourself, So I went with the idea that I'll go into the screening and mera scene kab aayega, kind of. Subconsciously you're thinking of it. To the extent that I went with the flow of the film, and I entered my scene, and it was in the middle of my scene that I realized, oh, this is me in some ways. It was only later that somebody from my, behind kind of tapped me on the, hey, that's nice, or whatever that is, that I realized that what I'm trying to say is that I, as somebody who was very personally a part of that film, in the first screening, was taken with the entire storytelling of the film. And I came out enriched as an Indian, as an individual, and I said, wow, I like this film. I connect with this film, and I connect with the director of this film. Obviously, because of him, I connect with the characters of this film. And the moment I saw this, I said, iske numbers honge, nahi honge, we as actors will never know. But I know one thing, that koi bhi theatre mein agar jayega, if anyone goes to the theatre and watches the film, no one will come out of this film saying that, 90, 95, 97% people will come out saying, wow, I enjoyed that. Yeah. And I said, that's the success of a film. And hopefully if people start to speak to others, and the numbers generate, and it's a pertinent topic. It's a very important topic that has been dealt with in a very, very interesting, engaging and entertaining way. And it has to connect with audiences. अमूमन ये होता है कि फ्राइडे को अगर रिलीज़ होती है तो हम लोग थर्सडे को एक कास्ट एंड क्रू टाइप मामला होता है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि हमको फ़ोन आया कि भाई दिल्ली जाना है आपको। अरे मैंने कहा दिल्ली क्यों जाना है, कि नहीं वो फिल्म दिखा रहे हैं वहाँ आपको शरीक होना है। तो at one level I was very happy, and then the first thought that came to me, अच्छा यानी कि मैं पहली दफ़ा फिल्म दिल्ली में देखने वाला हूँ। तो ये ख्याल जब मेरे मन में आया तो कुछ हर तरह की फीलिंग्स उभरी। कुछ एक नर्वसनेस थी, क्योंकि होता ये है कि मैं तो बढ़ा गया हूँ यहाँ पे काम करते करते, कई साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं वो आपके दिल से ऐसी जुड़ी होती हैं, कुछ किरदार ऐसे होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ मेकिंग में आपको ऐसा मज़ा आता है कुछ चीज़ों में कि आप एक बच्चे की तरह उत्सुक हो जाते हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि ये फाइनल बनी क्या है चीज़। तो वो हमें मौका मिला दिल्ली में, लेकिन केवल ये था कि दिल्ली में हम स्क्रीनिंग में यूँ बैठे थे, मतलब वो स्क्रीन यहाँ था और हम यूँ देखें, तो हमारी पूरी फिल्म में मतलब गर्दन वर्दन तो आप भूल जाइए, मतलब बड़ा अजीब सा मामला रहा, टू पुट इट माइल्डली। और फिर एक बड़ी इच्छा हुई कि भाई चलो अपने चुपचाप बॉम्बे जाके मुंबई जाके हम लोग देखेंगे फिल्म, और फिर हमने मुंबई में देखी। और उसके पहले हमें दिल्ली की स्क्रीनिंग हालांकि यूँ करके हमने देखी, लेकिन आपको एक अंदाज़ तो हो जाता है कि फ़िल्म कितना खींच रही है, कितना मुझे मज़ा आ रहा है, कितना लोगों को मज़ा आ रहा है, कितनी बढ़िया फिल्म बनी है। वो आइडिया तो हमें यूँ देखते ही हो गया कि ये चीज़ तो कमाल की बनी है। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग जाके बम्बई में उसको यूँ करके देखें जैसे हमें फ़िल्म देखनी चाहिए, नॉट लाइक दिस। लेकिन वो स्क्रीनिंग गुजर गई। जब यहाँ मुंबई में पहली दफ़ा देखी तो एक्चुअली फ़िल्म को जो है हमने एंजॉय किया, उसके मोमेंट्स को एंजॉय किया, उसके डायरेक्शन को एंजॉय किया। रील आफ्टर रील आफ्टर रील, इतनी एंगेजिंग फिल्म। मेरा परिवार, मुझे याद है जो प्रीमियर था उसमें मेरे साथ बैठे थे, और कुछ 1-1.5 सीन शायद मेरा गया। उसके बाद मैंने देखा, मैंने उन लोगों को बताया नहीं, लेकिन क्योंकि कलाकार बड़ा तेज़ होता है तो मैंने अपनी आँख के इस बाएं कोने से देखा कि वो लोग सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं और यूँ मुझे देख रहे हैं जैसे मैं कुछ खुदा का बच्चा हूँ। और मैंने कहा छक्का लग गया है।
तो जो फिल्म है वो इंटरैक्टिव फिल्म है, लोग खड़े होके इस फिल्म को ऐसा एंजॉय करते हैं। और मेरे जीवन में पहले भी एक मौका ऐसा आया था लगान एक फिल्म में जिसका मैं हिस्सा था, और लगान की जब हमने स्क्रीनिंग देखी तो हमने तब तक कोई इतनी इंटरैक्टिव फिल्म नहीं देखी थी कि हाँ भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ एज एन ऑडियंस और पर्दे से कुछ आ रहा है फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, यू नो द वर्ड इंटरैक्टिव। सो सिमिलरली इट हैपेंड इवन इन आर्टिकल 370। हम जब फिल्म देख रहे हैं लोग इतने मतलब खड़े होके और चौड़े हो रहे हैं और तालियां बज रही हैं, एंड वी रियलाइज दैट नॉट ओनली हम लोग मुतासिर हो रहे हैं इस फिल्म से, लेकिन देखने वाला हर शख्स, हर इंसान जो है उसको उतना ही मज़ा आ रहा है और वो दिल से देख रहा है। और स्क्रीनिंग जब ख़त्म हुई तो जो एक एनर्जी थी उस कमरे के अंदर, मतलब आप उसमें 2000 अंडे बॉयल कर लेते, इतनी एनर्जी थी उस कमरे में। एक तो ये कि कलाकारों ने, यूनिट ने, टीम ने, हमने खुद फिल्म अच्छे से देखी। और होता ये है कि जब आप एक यूनिट का हिस्सा होते हो तो हम लोग कभी कभी शूटिंग के दौरान मुश्किलात आती हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, ठंड है, भूचाल आ गया, ओले पड़ गए, आप वो चीज़ इमेजिन नहीं करते हो, लेकिन वो सब हमारी जीवन का एक हिस्सा बनते जाता है। हर फिल्म में, हर फिल्म अपनी कुंडली लेके आती है और उसमें अलग चीज़ें घटती हैं, और वो फिज़िकल लेवल पे मुश्किल हो सकता है, शारीरिक लेवल पे, लेकिन होता ये है कि हम हर चीज़ माफ़ कर देते हैं जब हम अपनी फिल्म देखते हैं और हमें लगता है हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बन गई, ये तो सारी सब कुछ माफ़ है। ये ना मुश्किल तो आती है, लेकिन फिर वही हमारा काम है। अब मुश्किल तो हर काम में है, आपके काम में भी मुश्किल है, उनके काम में भी मुश्किल है, बाई चांस कैमरा लुढ़क गया तो गए काम से। लेकिन हमारे काम में भी मुश्किल है, लेकिन हमारा काम जब हम उसे देखते हैं, एक चीज़ बना हुआ, एक परोसा हुआ डिश फाइनल, और वो अच्छी होती है डिश, तो मज़ा आ जाता है। सब माफ़ है, सब माफ़ है जी। First of all, I want to extend my heartfelt gratitude to everyone for the overwhelming response that we have got, and the question that you asked, what were my expectations on that Friday. So normally a premiere happens on a Thursday, but this time, as sir mentioned, we had a special screening in Delhi on Wednesday. And you know what, when my director Aditya Jamri had narrated me the script, I was like, Aditya, ये 50% भी जो तू बता रहा है इसका 50% भी हो गया ना, तो then we have a hit film in the hand. He said 50 नहीं है, 100% ही करना है यार जो मैं बता रहा हूँ. So then दिल्ली की स्क्रीनिंग में ना मोस्टली दे वर वेरी सोफिस्टिकेटेड एलीट पीपल, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई ताली सीटी बजाएगा. आई वाज लाइक आफ्टर द फिल्म गेट्स ओवर दे विल बी लाइक वंडरफुल परफॉर्मेंस, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, ये कैटेगरी सब होगा ऐसा मुझे लग रहा था. लेकिन आई गेस 15 या 20 मिनट होने के बाद पीपल स्टार्टेड विस्लिंग, क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे. सो आई गेस उस वक्त वी गॉट दैट थिंग कि आवाम को पसंद आ रही है, एंड दैट ग्रेजुअली ट्रांसलेटेड इनटू द बॉक्स ऑफिस नंबर्स एज वेल. एंड आपका एक होता है कि यू थिंक दैट ओके दिस इज़ हाउ द फिल्म विल वर्क, और देर आर क्वाइट लॉट ऑफ डिस्कशंस बिफोर द फिल्म रिलीजेस, बट एक्चुअली ऑन फ्रॉम द फ्राइडे द फिल्म बिलोंग्स टू द ऑडियंस, एंड देन यू जस्ट कांट टेल कि एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर्स वो ग्राफ कैसे जाएगा. हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ गया. सो द क्रेडिट गोज टू द ऑडियंस एंड द डायरेक्टर, द राइटर for the phenomenal work that they have done, and the amazing ensemble that we have. So true, so true. I think that's well said by all of you. Talking to you, I have to say that the two scenes that I can't forget. The first, that you have to catch the terrorists, and Yami ma'am that she does not have the approval of Khabar, and you still go for it. And the second scene is when you're taking the person in the car, and you have to decide because you have 15 minutes. 15 minutes में तो भाई वो mob वाले lynch हो जाएगा, scene create हो जाएगा. And what do you do at that point of time? And it's unsaid, not to say just I don't want to say it. People who haven't watched should watch it. And the expression that you had after that, you didn't want to do it, but you did it, कोई option नहीं था. But I mean, who could have imagined that scene to be taking place coming from this part of the group and doing that? But that really worked. You guys were able to every screening or wherever, like कभी-कभी होता है ना, you just go there randomly.
every time that scene used to come, there were whistles and people used Yeah, to love yeah. that particular scene. That's true. And even the last scene, sir, Yeah. when you have the newspaper in hand and you're sitting in the car, there's no dialogue. You're just seeing the newspaper, the headline of the newspaper is shown, and you just, it's like the observation and you're in your thoughts. Okay, like the promise is fulfilled in that situation. I have to say, one of the best scenes. I mean, you're such an experienced actor, but for a viewer to watch it without a dialogue, just the movement, just the expression, that was enough for that scene to be one of the best scenes in the movie for me. And how, like, you know, when the whole shooting was going on, what was the, I would say, the BTS moment, like behind the scene moments, like what were the discussions like while you all were making the movie? वो सीन में सिर्फ उतना ही नहीं था कि जो हमें करना था वो हमने कर दिया है. उस वक्त वो कैरेक्टर एक चीज़ और भी सोच रहा था. What next? What next? That was very important. Yeah. That's very important, and this will happen soon. Sooner or later, it will happen. Yeah. Because that man whom we are talking about, he is not going to stop. Yeah. Yeah. So there was this very, I mean, generally, for me, it was a very short-lived association, 3-4 दिन का जो भी shoot था, but it was very fulfilling. एक दिन पे बड़ा interesting हुआ था, जो there's this scene between my character and Yami's character where she ends up throwing me outside or whatever, you know. तो उस scene में जो था शुरुआत में मुझे इंटेरोगेशन के लिए लाया गया है. एंड इनिशियली जो वो सीन था उसमें डायलॉग्स इस तरह से थे कि दे वर ट्राइंग टू शो कि ये जो कैरेक्टर है ये कितना स्मार्ट एंड शातिर है, ये चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है. आप इसको बस ऐसे हुडी पहना के ऊपर हुड पहना के ले आए हो और उसे पता नहीं चलेगा, यू नो, ही इज़ नॉट अ नोबडी काइंड ऑफ अ सिनेरियो. दे वांटेड दैट एस्पेक्ट टू कम. And it's, I mean, credit to Aditya and Monal who wrote it together, and you know that they were willing to interact with the actor also and let me know that we still not got what we want. अच्छा, मैं उसी दिन सुबह जब अपने होटल से जब when I was going to the set shooting, I'm a Kashmiri, so you know I've been there. अब मैं जब गुजर रहा था, I passed this one particular mosque, और वहाँ से जो वहाँ के जो मुअज्जिन थे वो जो अज़ान दे रहे थे, इतनी प्यारी अज़ान दे रहे थे. It was beautiful, and you know I felt like wow, you know, this is what a great morning to start with, you know, कि अब हम शूटिंग पे जा रहे हैं. एंड सडनली 400 मीटर 500 मीटर क्रॉस हुआ तो एक दूसरी मॉस्क थी. एंड इट हैपन टू बी कि ये जो श्रीमान थे, जो मुअज्जिन, जो इस दूसरे वाले मॉस्क में थे, वो उतना ही ख़राब गा रहे थे उस चीज़ को, यू नो. और वो जो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लता जी गा रही हैं और सडनली पता नहीं कौन गाने लग गया. और मैंने कहा अरे ये क्या हो गया. मैं एक सुरूर में था और वो टूट गया. वो हो गया. तो जब मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया. आई सेड मैं ये चीज़ इंक्लूड कर सकता हूँ क्या. तो उन्होंने कहा क्या करेंगे आप, कैसे कहेंगे. तो उन्होंने वो जब उठाते हैं तो मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ का जो मुअज्जिन है इसकी आवाज़ उतनी सुरीली नहीं है, तो आप मुझे आपको कहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, मैं कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ वाला जो. सो आई एम सेइंग दिस वाज अ वेरी कोलैबोरेटिव, and for them to accept it, you know, and this happened in so many small things, and I feel that then shows on the screen because it was something that came from a personal experience and it connects automatically. So I truly believe that when your writer and your director, they are very well prepared. For actors, it becomes very easy because everything is served on a platter, which happened in this case because Monal and Aditya, they were very clear what exactly they want, how they see that character and how they see the particular scene, the graph. So for me, it was just following their instructions, and certain challenges which we faced is like shooting in October and November in Kashmir. The temperatures were really
like 1 or 2 degrees at times. And the night shoot, the fight sequences which you mentioned, night shoot in Kashmir and with like doing a fight sequence, that was quite challenging. And you know what, I always had high regards for the army and our soldiers, but when you actually don that uniform and when you actually do certain fight sequences there, the respect increases by leaps and bounds. Because you know, we at least we had the heaters, and after the shot got over, people used to come with the kambals and everything. But In reality, I remember that the was day I landed in Srinagar, it was raining, and it was raining cats and dogs. So I visited Srinagar, and I'm used to the sight that the moment your car comes out of the airport, you have army men. So that day it was raining. I was like, आज शायद कम होंगे लोग, but they were still there, standing right there, and like बारिश के बीच में. So the whole experience, I guess, of working in this film, it improved me as a human being, and it helped me to understand certain nitty-gritties. Vis-a-vis Kashmir, it helped me to understand the complexities, because that is one of the most complicated states to govern, I feel. And so overall, the experience was really good, and the credit goes to our writer and director, because the issue is really controversial to a certain extent at times, but the way they have dealt it, the way they have narrated the story, everyone who comes out of the theatre, they say that yes, it's a very well made film, and I think we need to give the credit to those two. Sometimes you get a sense that the universe is with you. और मुझे ये अंदाज़ा कैसे हुआ कि मैं दिल्ली से श्रीनगर हवाई जहाज़ में जा रहा था अपनी शूटिंग शुरू करने. एज यू नो, आई प्ले अ कॉम्पोजिट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन कश्मीर. एंड आई गॉट ऑन टू द प्लेन एंड आई वाज सिटिंग राइट इन द फ्रंट. आई थिंक मेरा सीट नंबर 3 था, और मेरे साथ एक शख्स आके बैठे जो कश्मीरी थे, और मेरी इमीडिएटली इच्छा हुई कि मैं इनसे, भाई ये लोकल आदमी है, इनसे ज़रा पूछूं कि क्या कश्मीर की सच्चाई बताइए, ये वो. इन सेंस आई वाज प्लेइंग अ पॉलिटिशियन. आई सेड पॉलिटिशियंस पे भी थोड़ी दया दृष्टि अपनी डालिए और बताइए मुझे इनके बारे में ये वो मुझे बता रहे थे. प्लेन के अंदर सीटें भरती गई, और हम क्योंकि आगे बैठे थे इसलिए आगे की सीटें भी भरती गई. और एक पॉइंट के बाद एयर होस्टेस ने आके बोला, हाँ भाई ग्राउंड स्टाफ उतर जाइए, ये वो. ग्राउंड स्टाफ उतर गया. अब हम इंतज़ार करें कि प्लेन उड़ेगा, हम कश्मीर जाएंगे और पॉलिटिशियन का रोल करेंगे. सब कुछ बंद होने जा रहा है. एक पोर्टर साहब आए जिनके सर के ऊपर कुछ 2 किलो का सूटकेस, मतलब 2 किलो का सूटकेस वो सर पे क्यों रखे थे, पहले ये भी एक सवाल उठता है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे. वो 2 किलो का सूटकेस उन्होंने करके ढप मेरे आगे की सीट वाला वो खोला, सामान जिसमें आता है, और रख दिया, और यूँ सबको कुछ सॉरी वॉरी बोलते हुए निकल गए. उसके बाद मैंने देखा कि एक बड़े लीडिंग पॉलिटिशियन कश्मीर के वो आए और सॉरी बोला उन्होंने सबको. उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र दी, शायद मुझे पहचाना होगा कि ये तो कुछ एक्टर वैक्टर टाइप है, और मैं उन्हीं का रोल करने जा रहा हूँ कश्मीर. और मेरा उस वक्त दिमाग एज अ डायरेक्टर गया. मैंने कहा अगर मैं डायरेक्टर होता तो इस वक्त मुझे इतना खूबसूरत शॉट है, द रियल एंड द अनरियल, इतना खूबसूरत वो. मुझे ऐसा लगा कि द यूनिवर्स इज टेलिंग मी, एंड द मैन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज टेलिंग मी, जा बच्चा तू कर ले. So it's a very odd thing, but as actors we have these kind of interesting stories. Yeah. So for me it was a lovely thing right from the moment go. I felt कि हाँ भाई मैंने सही पैजामा कुर्ता पहना हुआ, सही जगह आ गया हूँ मैं जी. Well, I have to say all the anecdotes that you all mentioned or talked about give us examples of how tough and how much of hard work is involved to play that character in real life. The person you're playing as a character in a movie, how do they actually work in real life? Be it your role, being aware of where you are and what is going around you, the chappa of Kashmir, and your part as an officer, that of course they don't get those kambals when they are on duty. Keeping in mind after reading that, what next? And then playing that character, and who comes in front of you, like, oh my god, this is exactly what I'm doing. So there's a lot that goes into it. And on that note, thank you so much for giving us so many information and so much of learning from the movie.
And good luck. Thank you for joining us today at Midday. Thank you so much. Thank you, Surabhi. Thank you. Namaskar. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.